Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें relativistic Doppler's effect where we will study about the frequency and wave number. देखो Doppler effect हमें जानिछु it can be applied to longitudinal, that is your sound waves, and it explains the apparent change in frequency of a note due to the relative displacement between the source and the listener. Okay, जदि एठी हमें साउंड वेव न नहीं कि लाइट वेव जदि नेला ताहले सेम जिनस ये कहबो apparent change in frequency due to the relative displacement between the source and the observer, right? So a generalized treatment of this Doppler effect which could be applicable both to the longitudinal and transverse. Longitudinal हेगला तमरो sound waves, transverse waves हेगला light waves. So a longitudinal आउ transverse दुईटा जाक वेव प्रति एप्लिकेबल होतबा गोटे आमे यदि जनरलाइज ट्रीटमेंट बाहर करि परिबा डॉपलर इफेक्ट रो देन याकू आमे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करी ए जिनसटा को डेवलप करि परिबा. So for this consider a plane wave which is sent by the observer s dash. Okay, s dash रे थिबा observer o dash जो observer अछि से कोन करछि गोटे प्लेन वेव सेंड करूछि एठी फिगरटा एठी देखो मु निजे करूछि. So suppose this is the wave, right? So ये गोटे plane wave send कला while the wave is watched by the observer o in the frame s and also the observer o dash is watching it, right? Now the two observer will give the equation of this wave accordingly. Suppose first observer o याकू लिखिला y equal to a exponential I nu then t minus x cos alpha plus y sin alpha by c. Okay, एटी ए एंगल टा होची alpha. Okay, alpha is the angle which the wave is making with the positive x axis. आ एटी a ही गला amplitude, right? Nu होची एटी frequency. Okay, similarly observer o dash याकू ए इक्वेशन को लिखिबो y dash equal to a exponential I nu dash t minus x dash cos alpha dash plus y dash sin alpha dash divided by c. Okay, so ये हला wave equation. now जेमती कहली nu आउ nu dash होची frequency of the wave as observed by the two observers in s and s dash. Okay, आउ एठी alpha और alpha dash हिगला जेमती एठी देखो चित्र रे कहिची this is the angle which the wave, actually this is the wave normal, right? Wave normal is making with the positive x axis, okay, in the two frame. So एठी wave normal जो एठी कहूची wave normal means कोन एठी देखो ई स्टार सिंबल दीची तळे देखिबा wave normal means what? Wave normal होची is a perpendicular which is drawn to the surface of a wave front at any point in the direction of propagation of light. Suppose this is the source of light. Okay, accordingly wave front ए हिसाब रे बाहरुची. Okay, these are the wave fronts. आमे कोन करिबा एबे perpendicular draw करिबा. ओके, परपेंडिकुलर हिसाब रे हमें ड्रॉ कला. सो ए जो परपेंडिकुलर गुडा होची वेव नॉर्मल. ओके, एंड दिस वन दिस इज द वेव फ्रंट. ओके, अच्छा तापरे एतिकी जानला पोरे नाउ the argument of the exponential function must be same since these represents the same wave in the two frames. Okay, that means ए जो exponential part टा अछि एठी इक्वेशन रे एक्सपोनेंशियल रो ई पार्ट टा. ओके,
यार फॉर्मेटटा सेम रहिबो बिकॉज सेही गोटे ही वेव को रिप्रेजेंट करूची ओके से जिनस एठी कहला तेणु एक्सपोनेंशियल रो ए पार्ट को आमे लिखि परिबा दुईटा जाको इक्वल बोलिकी दैट इज दे मस्ट बी इनवेरिएंट when converted from one frame to another, right? Now let us use the inverse Lorentz transformation equation. देखो एज पर इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टाइम t is equal to t dash plus v by c square into x dash divided by square root of 1 minus v square by c square. आमे एठी रिप्लेस करिबा 1 by square root of 1 minus v square by c square को with a quantity small k, then t रो वैल्यू आसीगला k into t dash plus v by c square into x dash. Similarly x रो इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आमे लिखि परिबा x dash plus vt dash by square root 1 minus v square by c square which is equal to k into x dash plus vt dash. आउ y रो ट्रांसफॉर्मेशन जदि देखिबा इट इज सिंपली इक्वल टू y dash. सो x y आउ t रो जो एठी आमे वैल्यू पाइला ताकू ऊपर जो इक्वेशन 34 सेठी सब्स्टिट्यूट करिबा ओके सब्स्टिट्यूट करला एठी सब वैल्यू गुडा याकू टिके सजाई के लिखि देबा राइट. Now you can see in both sides since the identity is holding for all values of x dash y dash and t dash तेणु आमे यार कोफिशिएंट को इक्वेट करि परिबा बोथ साइड रे अकॉर्डिंगली न्यू डैश एठी देखो न्यू डैश अछि दिस मस्ट बी इक्वल टू न्यू इंटू k इंटू 1 माइनस v by c इंटू cos alpha ओके ए क्वांटिटी राइट बिकॉज एठी देखो न्यू into this much into t dash अच्छी ए साइड रे कौन अच्छी न्यू डैश टी डैश तेणु करी न्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू न्यू इंटू दिस मच राइट कोफिशिएंट को आमे इक्वेट करूछु. सिमिलरली टाइम कोफिशिएंट देखिदेला तापर देखो एठी आमे नेक्स्ट कोफिशिएंट को देखिबा एटा होची x रो कोफिशिएंट और x डैश रो कोफिशिएंट. सो एठी आमे लिखि परिबा न्यू डैश cos alpha डैश by c to be equal to माने एटा ओके ए पार्ट गुणन एठी न्यू डैश. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू न्यू के ए न्यूटा मल्टीप्लाई हला ए टर्म रे ओके न्यू के cos alpha by c minus v by c square and the last one न्यू डैश sin alpha dash by c माने this into this must be equal to न्यू then this term sin alpha by c ओके या को तीनटा इक्वेशन आमे लिखि देला राइट. सो एठी देखो फर्स्ट इक्वेशन इट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेटिविस्टिक Doppler इफेक्ट ओके फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट एठी k रो वैल्यू जो आमे यूज करथला ताको एबे पुट करिबा 1 by square root of 1 minus v square by c square ओके या को आमे ए हिसाब रे सजै के लिखि देला ओके न्यू रो वैल्यू आसिला न्यू डैश इनटू स्क्वायर रूट 1 minus v square by c square divided by 1 minus v by c into cos alpha okay एतकी इक्वेशन पाइला याकू सपोज गोटे इक्वेशन लिखि देला हमें. नाउ हियर न्यू डैश is the frequency of the wave as noted by the observer o dash in the frame s dash okay and this is the original frequency. मन रखो ऑब्जर्वर ओ डैश लाइट सिग्नल हो कि से साउंड सिग्नल हो ताकू सेंड करूची ओके तेणु ता पई सेही वेव सिग्नल फ्रिक्वेंसीटा ओरिजिनल बा प्रॉपर फ्रिक्वेंसी हेबो किंतु न्यू जो अछि एटा होची फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एज नोटेड बाय द ऑब्जर्वर ओ इन द फ्रेम एस. सो ऑब्जर्वर ओ को प्रथमे कोन देखा जिवो फ्रेम एस रे जेतु ऑब्जर्वर ओ अछि आ फ्रेम एस टेस्ट जेतु मूव करूची ओके तेणु ताकू लागिबो जे फ्रेम एस टेस्ट टा ताठू दूर को जाउची ओके इट इज मूविंग सो रिलेटिव मोशन आसिला तेणु से जो फ्रिक्वेंसी नोट करिवो दैट विल बी डिफरेंट ओके ता पई फ्रिक्वेंसी रा जदी हला न्यू देन it will be changed or it is called your apparent frequency, that is the change being due to the relative displacement between the source and observer. तेबे एटी दुईटा केस एराइज करि पारे ओके फर्स्ट केस तो तुम देखुछ जेमती फ्रेम एस टेस्टा एस रु दूर को जाउची राइट मे बी एमती भी ही पारे जे फ्रेम एस टेस्टा एस आड़ को भी आसी थाई पारे ओके सो से दुईटा जाको केस को आम डिस्कस करवा आ गोटे केस भी आसो जो थे कि आम पुणी सिग्नाल को देखा जे से जो सिग्नाल
प्लेन वेवटा से सेंड करुच्ची तार एंगल जो अच्छी अल्फा ये अल्फार भैल्यूटा ऊपर डिपेंड करिवो ओके अकॉर्डिंगली विल हैव two types of Doppler's effect. One is your longitudinal and the second one is your transverse Doppler effect. Okay, so first I am देखिबा longitudinal Doppler's effect. देखो in case of longitudinal Doppler's effect may be alpha ର value 0 ହେବ କିମ୍ବା 180 degree ହେବ. Okay, so here the observer is situated on the line of motion of the source. ओके सो सोर्स होची का पाखरे ऑब्जर्वर ओ डैश पाखरे ओके से गोटे सोर्स रखी साउंड वेव रो कि लाइट वेव रो एंड ही इज सेंडिंग द वेव राइट सो दिस सोर्स जो लाइन रे एटा अछि जो लाइन रे मूव करूची ए सोर्सटा तार ठीक सेम लाइन रे ही ऑब्जर्वर छिड़ा हिची राइट सो फर्स्ट केस आमे देखिबा केस 1 when the source is approaching the observer एबे देखो फिगर टाको मु एबे टिके चेंज करिछि एबे आमे s को राइट साइड रे रखुछु s डैश को लेफ्ट साइड रे रखुछु काहे कि एमती चेंज हला बिकॉज एबे देखो आमे जानिछु s फ्रेम तो सिंपली रेस्ट रे अछि एज इट इज s डैश मूव करूछि टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस एबे देखो ए जो s डैश मूव कला अकॉर्डिंगली ए सोर्सटा होछि o डैश पाखरे सो this source is moving towards the observer O. Okay, so here the source is approaching towards the observer. सेही जिनस पाई ही फिगर को मुझे इंटरचेंज करके निजे एटा करिछि ओके नले एटा बुझी पारे टिके कष्ट होई थांता सो एबे एंगल जदि देखिबा अल्फा अल्फाटा को एंगल थिला हमरो स्टार्टिंग रे जेतेले हम देखुतिला वेवटा ए हिसाब रे जाउतिला आ एंगलटा ए अल्फा आस्तला जोटा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस सहित क्रिएट होउतिला सो एठी हमरो वेवटा ए डायरेक्शन रे जाउछि इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो सोर्स जो मूव करूछि सेटा भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो एठी अल्फा रो वैल्यू केते आसिला 0 आसिला राइट सो आमे एठी अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दवा ऊपर जो फ्रीक्वेंसी रो इक्वेशन पाइतिला इक्वेशन 43 ए इक्वेशन रे ओके वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा टू बी इक्वल टू 0 ताले इक्वेशन एबे रिड्यूस करि गला याकू एबे आमे सॉल्व करिबा फाइनली we will get nu equal to nu dash into square root of c plus v by c minus v. Now in terms of wave number okay wave number माने कोन it is the reciprocal of wavelength so आमे जानि छु frequency जदि हला nu then it is equal to c by lambda similarly nu dash को आमे लिखि परिबा c by lambda dash c होउछि light velocity एटा तो constant ताले आमे देखिला जे nu is inversely proportional to your wavelength okay ताले ए जो 1 by lambda reciprocal of wavelength this is nothing but the wave number that is nu bar and similarly nu dash is proportional to your 1 by lambda dash that is inversely proportional to lambda dash which is equal to nu dash bar ताले आमे लिखि परिबा एठी lambda to be equal to lambda dash into square root of c minus v by c plus v ओके केवल एठी इंटरचेंज कर देला ओके इंटरचेंज कर देला हमें क्वांटिटी को ओके एई जो स्क्वायर रूट टर्म टाको हमें आर पट को नहीं गला तापरे एठी न्यू जगह रे हमें लिखिला न्यू जगह रे हमें लिखिला एठी लैम्बडा डैश आउ न्यू डैश जगह रे हमें लिखिला लैम्बडा काहे कि एमती लिखिला बिकॉज न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा राइट तापरे जदि आमे बे वेव नंबर हिसाब रे लिखिबा ताले न्यू बार इक्वल टू न्यू बार डैश एटा जो फॉर्मेट रे अछि सेही फॉर्मेट रे ही हेबो न्यू बार इक्वल टू न्यू बार डैश इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस v बाय c माइनस v ओके ताले देखो एठी एई जो ऊपरे इक्वेशन टा हमें पाउछु एई क्वांटिटी ओके एठी लक्ष्य करो न्यू आउ न्यू डैश जदि आमे देखिबा c प्लस v अछि ऊपरे c माइनस v अछि तळे सो निहाती भाव रे c प्लस v इज ग्रेटर देन c माइनस v so that this quantity the square root भितरे जो क्वांटिटी अछि it must be greater than 1 okay that means this new is greater than new dash because new dash सहित more than 1 गोटे क्वांटिटी मल्टीप्लाई होछि right so there is an increase in the frequency right so एठी ए जिनसटा कहूछि an increase in the velocity v
of the approaching source will result in an increase in the apparent frequency, which is nu, right? And this explains a shift. Okay, जेहेतु frequency increase कला माने shifting हला. Okay, so जदि frequency बढ़ुची ताले wavelength कमिबो, right? Wavelength जदि कम हला, आमे जदि in terms of visible light देखिबा blue light रो wavelength टा कम थाए. Okay, so आमे याकू कही परिबा जे the frequency is shifting towards the blue color or the wavelength is shifting towards the blue color. Okay, which is the color of greater frequency or lesser wavelength. याकू हमें blue shift बोले कि कहिबा. Okay, so ये हला first case. Second case एबे देखो, when the source is receding away from the observer, माने source टा observer ठारू दूर को जाउची, right? So एबे आमे जेमती conventional figure करू से हिसाब रे रहिबो यार figure टा. किंतु एबे देखो source हमर कोन एई जगह रे अछि, o dash point रे अछि. याकू देखुची किए observer o, but the source is moving along this direction because the frame S dash is moving with a velocity v along the positive x axis, right? ताले suppose एठी आमे गोटे लाइट बॉल टे जळैछु, right? so ए लाइट बॉल टा एपट को मूव करूची, किंतु एई ऑब्जर्वर जेते बेले देखिबो ए लाइट बॉल टू लाइट टा ता आड़ को ए डायरेक्शन रे आसुची, राइट? सो एंगल एबे केते हला पॉजिटिव x एक्सिस सहित, दिस इज द एंगल व्हिच इज 180 डिग्री, राइट? सो अल्फा एठी 180 डिग्री बा पाई रेडियन. ओके, सो सेही इक्वेशन 43 रे आमे एबे अल्फा जगह रे पाई पुट करिबा, ताले न्यू रो वैल्यू आमे इजीली कैलकुलेट करि परिबा. फाइनल वैल्यू न्यू रो आसीबो न्यू डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस v बाय c प्लस v. एटी गोटे जिनस कही रखुची, एटी न्यू आउ v पाखापाखि टी सिंबलटा एका एका जना पड़ुची, टी ध्यान से देखिबो. और बेटर यू कैन रिप्लेस दिस क्वांटिटी न्यू जोटा फ्रीक्वेंसी पाई यूज करा जाउची, तमे याकू f हिसाब रे मध्य लेखि परिबो, राइट? नाउ इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जेमति आमे फर्स्ट केस रे देखुतला, ताले आमे एठी भी आनी परिबा लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा डैश, एटा चेंज हो जिवो. ओके, तळटा ऊपर ऊपरटा तळ हो जिवो. ताले लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा डैश इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस v बाय c माइनस v. आ वेव नंबरटा एज इट इज रहिबो ए फॉर्मेट रे न्यू बार इक्वल टू न्यू डैश बार इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस v बाय c प्लस v. ताले एबे लक्ष्य करो c प्लस v इज ग्रेटर देन c माइनस v. दैट मीन्स ए जो स्क्वायर रूट भितरे ए क्वांटिटीटा आमे जदि बाहर करिबा, दिस विल बी लेस देन 1, so that this nu will be less than nu dash. Okay, so an increase in velocity v of the source which is receding away from the observer will result in a decrease in the apparent frequency, that is nu. So frequency decrease jodi hela, accordingly wavelength increase karibo. Okay, so eta gote confirmation dekhauchi shifting towards the red color. Okay, so in case of radiation which is coming from distant galaxies, okay, ताकू जदि आमे ऑब्जर्व करिबा इन द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तेणु से जगह रे एटा रेड कलर आड़कू शिफ्टिंग होउची, बिकॉज रेड कलर रो वेवलेंथ टा बेसी रहे और रेड कलर रो फ्रीक्वेंसी टा कम रहे. याकू आमे रेड शिफ्ट बोली कि कहिबा, राइट? सो ये हला लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर्स इफेक्ट. एबे देखिबा सेकंड कैटेगरी व्हिच इज द ट्रांसवर्स डॉपलर्स इफेक्ट. तो याकू भी बुझे पाई देखो मु एठी चित्र गोटे ड्रॉ करिछि. सो एई केस रे कोन हबो, इन केस ऑफ योर ट्रांसवर्स डॉपलर्स इफेक्ट, द ऑब्जर्वर विल बी सिचुएटेड ऑन ए लाइन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ सोर्स. सोर्स अछि ओ डैश पाखरे. ओके, एई सोर्स टा मूव करूची केमती, ए जो एस डैश फ्रेम अछि एटा एई पटे विथ द वेलोसिटी v. सो एई डायरेक्शन रे सोर्स मूव करूची. सोर्स थ्रू लाइट टा देखुची किए ए ऑब्जर्वर ओ. सो ताकू लागुची जे लाइट टा ए ऊपर को उठुची, राइट? सो एबे ए जो ऑब्जर्वर ओ, इट इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइन, दिस लाइन which is perpendicular or at right angle to the direction of propagation of source. So एठी एंगल अल्फा हे गला केते 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, राइट? सो याकू आमे अगेन इक्वेशन 43 रे पुट करले,
find out the value of your frequency eta asibo nu equal to nu dash into square root of 1 minus v square by c square. Okay, and in terms of wave number जदि आम बाहर करवा वेव लेंथ देख लैम्बडा इक्वल टू उल्टा हो लैम्बडा डैश बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ वेव नंबर एज इट इज फॉर्मेट रहिबो न्यू बार इक्वल टू न्यू डैश बार इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जदि ये वेलोसिटी v विल बी वेरी वेरी लेस देन c. ओके माने क्लासिकल अप्रोच को पळे आसीबा ताले न्यू विल बी इक्वल टू न्यू डैश. So this equation indicates that the apparent frequency change which is actually decreasing. कहीं decreasing because ये जो square root देखो जो एक quantity रा सब बड़े less than 1 हुए, so that nu will be less than nu dash. Okay, so frequency decrease करुची due to the increase in velocity of the source when the observer is situated at right angles to the direction of propagation of source. Okay, आज एमती कहली in case of your classical physics जेतबेले velocity v is very very less than c is then no such phenomenon माने no such transverse Doppler effect has been observed or predicted by the classical physics. Okay, this is where the relativistic treatment differ from classical treatment. Okay, classical कहला कोन frequency किछि भी change हेबो नाही जेतेबेले 90 degree angle रहउची source रो direction आउ observer भितरे किंतु relativistic effect कहला जे एंती हेबनी rather its expression will be like this velocity ऊपर depend करिवो. So the transverse Doppler effect actually it was experimentally verified by Eves and Stilwell in case of radiation from moving ions in canal rays by noting the shift in the frequency spectroscopically. ओके सो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल दुईटा केस आउ ट्रांसवर्स ओके ताकू अति सहज बुझापी ये फिगरटा मुझे इनक्लूड करी. फास्ट देख आम लॉन्गिट्यूडिनल देखा माने ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड इन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स सोर्सटा मुव करपटे. ओके ठीक अच्छे फास्ट केस जो आम देखुला जो थे अल्फा इक्वल टू 0 ये थीटा लिखाई सेम जिनस. सो ये सोर्सटा देख मुव करुच्ची टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज ओ. ओके सो ये थीटा होगा 0 डिग्री एंड इट इज योर ब्लू शिफ्ट तेणु ये ब्लू कलर दिखाई राइट. किंतु जदि ये सोर्सटा यपटे मुव कर ऑब्जर्वर रु दूर को जीवो. ओके इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ताले ऑब्जर्वर तो यपटे ही देखुची ना. सो दैट सोर्स रु जो लाइटटा आसीबो ता आड़ को ओके देन एंगल केते हेबो 180 डिग्री एंड इट इज योर रेड शिफ्ट. सो दैट दिस इज रेड इन कलर. ये है लॉन्गिट्यूडिनल रो दुईटा केस. तापर ट्रांसवर्स को देखो ट्रांसवर्स रे एबे देखो सोर्सटा एठी अछि इट इज मूविंग अगेन इन दिस डायरेक्शन किंतु ऑब्जर्वर को पटे अछि एई पटे अछि. ओके सो दैट ऑब्जर्वर ए तळ को देखिबो. ओके ता पई ए लाइटटा ए डायरेक्शन रे आछि. सो 90 डिग्री एबे क्रिएट हे गेला एंगल. ओके एटा आछि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट. ओके फाइनली ए जो तीनटा जाको केस सेठी जदि आमे देखिबा रिडक्शन ऑफ योर relativistic Doppler effect into classical result. ओके सो जो इक्वेशन आम relativistic Doppler effect रो पाइला सेटा जेतेबेले classical result को रिड्यूस करिवो जेतेबेले v is very very less than c हेबो. ओके that is when the ratio v by c is less than 1 so that we can neglect it. So equation 43 जोटा आमे पाइथिला this one एबे याको आमे लिखि परिबा ए जो स्क्वायर रूट टर्म टाको आमे नेग्लेक्ट करि परिबा. ओके बिकॉज 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज वेरी स्मॉल. सो एटा को सिंपली 1 लिखि हेबो. सो एटा आसीगला सिंपली न्यू डैश. आ एठी देखो तळे जो अछि 1 माइनस v बाय c इनटू cos अल्फा एटा ऊपर को पळे गला. सो टू द पावर -1 हला. नाउ वी अप्लाई द बायनोमियल एक्सप्रेशन आ एठी फर्स्ट टर्म को ही केवल लिखिबा. सो आमर वैल्यू आसिला न्यू इक्वल टू न्यू डैश इनटू 1 प्लस v बाय c इनटू cos अल्फा. एबे आमे यदि डिस्कशन करिबा जो लॉन्गिट्यूडिनल रो दुईटा केस फॉर अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंगली न्यू रो वैल्यू आसिला न्यू डैश इंटू 1 प्लस v बाय c आ एठी आसिला फॉर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री न्यू इक्वल टू न्यू डैश इंटू 1 माइनस v बाय c. आ यदि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट क्लासिकली देन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री. सो सिंपली न्यू इक्वल टू न्यू डैश. सो as per classical results there is no transverse Doppler effect. Okay.
Thank you.